बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम। क्या है जी? डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। When the earth was formed around 4.6 billion years ago, there were no life on it since the surroundings were inhospitable to living organisms. Earth was formed from solidified clouds of dust and gases left over from the creation of Sun. For around 500 million years, the interior of Earth stayed solid and relatively cool at around 200 degrees Fahrenheit. The main ingredients were iron and silicates, with small amount of other elements, some of them radioactive, like uranium. As millions of years passed, energy released by radioactive decay, most of uranium, thorium, and potassium gradually heated Earth, melting some of its constituents. The iron melted before the silicates and being heavier sank towards the center. This forced up the silicates. After many years, the iron reached the center and began to accumulate, exploding volcanoes and flowing lava covering almost everything. Finally, the iron in the center accumulated as the core around it. A thin but fairly stable crust of solid rock formed on Earth cooled. Depressions in the crust were natural basins in which water rising from the interior of the planet through volcanoes and fissures collecting to form the oceans. Slowly, Earth acquired its present appearance. 1 billion years later, there were with prokaryotic life forms, which are considered to be ancestors to all present living things. The last common ancestors of all presently living organisms must have characteristics which are now present in the organisms. The common characteristics of living species can be enumerated as फर्स्ट वन है जी हमारे पास ऑल लाइफ इज सेलुलर इन नेचर, कि जितनी हमारी नेचर में लाइफ है वो सेलुलर है। दैन जी सेकंड पे हमारे पास आ जाता है आर लिविंग थिंग्स are made up of 50 to 90% water. The source of proton, hydrogen, and oxygen is in photosynthesis and the solvent of biomolecules. थर्ड पे है जी हमारे पास द मेजर एलिमेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो ये जी हमारे पास जो है ना मेजर एलिमेंट है लिविंग बीइंग्स में जो पाए जाते हैं। फोर्थ पे है देयर इज़ अ सेट ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल शुगर है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स आ जाते हैं, विटामिन हैं, कोएंजाइम, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अलावा भी और बहुत हैं, लेकिन ये मेजर यही है, यूनिवर्सली फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से जो है ना हमारी जो इकोसिस्टम की डेवलपमेंट हुई और इस तरह से एवोल्यूशन होती गई साथ साथ। देयर इज़ यूनिवर्सल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज द लिपिड bilayer. The early Earth is possibly provided all the elements and chemicals needed for life to begin. An ecosystem made up of organisms which establish themselves in the given area and have continued to survive and has not become extinct. The species hence possess genes which fit the environment and are tolerant
tolerant to disturbance like food, fire, drought, and productive rate that balance the natural catastrophes. As technology evolution being down our normal death rate, social evolution lowers the birth rate to strike a balance. Biological evolution is however much lower than social or technological. In ecosystem, organisms constantly adjust themselves to geologic or climatic changes and to each other. तो ये सब जो है ना साइकिल को बैलेंस करने के लिए होता है कि साइकिल जो है ना हमारा ओवरऑल बैलेंस रहे और ये जो निज़ाम है ये चलता रहे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अच्छा सा कमेंट करें। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है टाइम से आपको रिसीव हो और आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें, उससे सीख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।